हेलो फ्रेंड, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। तो वर्तमान आम मैंने लाइव आसी सारीचे। जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन भी विजिबल अच्छी फर्स्ट के मते कमेंट सेक्शन में जणाई दियो। देन आम मैंने आग को बढ़िबा एवं आमर क्लास टी को स्टार्ट करिबा। वेरी गुड इवनिंग ऑफ यू समस्त को प्रति नमस्कार। तो जल्दी जल्दी आसिके क्लास रे जॉइन हो जाओ। आज आमर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी रो डिस्कशन रही। जल्दी जल्दी आसिके क्लास रे जॉइन हो जाओ। जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन भी विजिबल अच्छी फर्स्ट के कमेंट सेक्शन रे जणे दियो। ठीक अच्छे ओके। तो समस्त को कही रखी जे समस्ते आसिकी कमेंट सेक्शन रे ए जो क्वेश्चन गुड़िकर आंसर निहाती भाव में दब। ओके तो चलो आउ डेरी न करिकी क्लास टी को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे तेबे ठीक हो कि भूल हो समस्ते आंसर दबा लगी ट्राए करो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखि नबा। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट प्रेसिडेंट इंडिया? 30 years, 25 years? आंसर कौन हम? क्वेश्चन कौन दिला व्हाट इज द मिनिमम एज कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतर प्रेसिडेंट होबा को हेले जड़े कैंडिडेट को कौन हम यार करेक्ट आंसर? वेरी गुड समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो। What is the minimum age for a candidate to be elected as the President of India? Okay. Very good 35 years नहीं कि ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर नहीं। ओके देन तो 35 इयर्स हेले भारतर प्रेसिडेंट होबा लगी जड़े नागरिक योग्य हो। ठीक अच्छे ता सहित आउ मध्य बहुत कथा तुम मैंने ये मन रखिब जे जेमितिक आमर वाइस प्रेसिडेंट रही। ओके जेमितिक वाइस प्रेसिडेंट रही वाइस प्रेसिडेंट को 35 इयर्स हेले ही से माने जड़े व्यक्ति को 35 इयर हेले ही वाइस प्रेसिडेंट हो पारे। तापरे जड़े एमएलए होबा को हेले माने केते वर्ष बयस हवा दरकार ना 25 इयर्स। सेमे जदि कहबा लोकसभा मेंबर होबा को हेले तांको केते वर्ष बयस हवा दरकार सेम 25 इयर्स। एवं जदि राज्यसभार जदि सदस्य हबार अच्छी जन को ताहले तांको 30 इयर्स हवा दरकार। ओके तापरे जदि जड़े मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके एमएलसी रो जदि मेंबर होबा को अछि ताहले तांको 30 वर्ष बा 30 इयर्स हबार निहाती दरकार। ठीक अच्छे तेबे 35 इयर्स हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन टे देखिबा व्हाट इज द chronological order of creation of Assam, Nagaland, Goa and Mizoram? तो आमे माने जानिचे भाषा अनुजाई हो किंबा जेकोसी कारण हेतु हो नुआ नुआ राज्य सबू धीरे धीरे गढ़ी उठिला सेमिति कि आसाम, नागालैंड, गोवा और मिजोराम रो मध्य उत्पत्ति घटी। तो ये तुम मैंने कह क्रोनोलोजिकल ऑर्डर रे प्रथमे कहा परे किए क्रमान्वय रे कहा परे किए कन्ना को राज्य परे को राज्य आसाम, नागालैंड, गोवा और मिजोराम मध्यरु को राज्य परे को राज्य कन्ना क्रिएट हेइछंती। ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर तेबे कोन हबो? ऑप्शन ए रे रहिछि आसाम, नागालैंड, गोवा, मिजोराम। ऑप्शन बी रे रहिछि आसाम, मिजोराम, नागालैंड, गोवा। ऑप्शन सी रे रहिछि आसाम, नागालैंड, मिजोराम, गोवा। ऑप्शन डी रे रहिछि आसाम, गोवा, मिजोराम, नागालैंड। तो यार करेक्ट आंसर तेबे कोन हबो? को राज्य परे को राज्य ए चारोटी जाक मध्यरु कहा परे किए क्रिएट हेइछंती कहि दियो जल्दी जल्दी। ओके एठी मन रखिबो सांग माने जे यार करेक्ट आंसर टी होउची ऑप्शन सी आसाम परे नागालैंड परे मिजोराम तापरे गोवा। ठीक अछि ए भली भाबरे
कौन ना उत्पत्ति लाभ करिसंती ए राज्य गुड़िक। आसाम जदि कहबा आसाम होची केबे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ना, तो ऑप्शन सी पाखरे ही लिखिदबा। तो आसाम केबे क्रिएट हेतिला ना 1935 रे, केबे 1935 रे। ओके देन आमे जदि कहबा नागालैंड कथा, नागालैंड हेतिला 1963 रे। ठीक अछि। तापरे मिजोरम, मिजोरम हेतिला 1987 रे। ठीक अछि। आ गोवा, गोवा भी 1987 रे हेतिला, बट मिजोरम हेतिला 1987 20 फेब्रुआरी। ओके 20 फेब्रुआरी, किंतु गोवा हेतिला केबे से 1987 रे, 1987 रे, बट 30 मे। ओके 30 मे। ठीक अछि। तो एही भाव में यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन, इन व्हिच ईयर यूनियन टेरिटोरीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। को वर्ष यूनियन टेरिटोरी गुड़िक इंट्रोड्यूस होता भारत में? 1949, 1950, 1956, 1960। केबे यूनियन टेरिटोरी इंट्रोड्यूस होता इंडिया रे? कौन हम यार करेक्ट आंसर? मन रखिबो। केबे हेतिला कहि दे टिके जल्दी जल्दी समस्ते, केबे हेतिला? वेरी गुड। तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। सांग मैंने समस्त आंसर दबा लगी ट्राई करो, ठीक हो कि भूल हो किसी असुविधा नहीं, भूल हो गले भी मन रखिबो, समस्त आंसर दियो। ओके ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। 1956 मसीह यूनियन टेरिटोरी गुड़िक इंट्रोड्यूस होता भारत में। कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता? तो मन रखिबो जे जो आमर स्टेट गुड़ाक ना एबीसीडी एमतीका क्लासीफाई कर दिया जाइथिला। ठीक अच्छे, किंतु एबीसीडी को जो ए बी सी डी स्टेट बोलिका कह जाउथि से सब उठे दिया जाए कि जो आमर 7th अमेंडमेंट एक्ट रही आम कॉन्स्टिट्यूशन रो 1956 मसीह कौन होता ना यूनियन टेरिटोरी गुड़िक ऐड कर दिया जाइथिला। ठीक अच्छे। तो यूनियन टेरिटोरी इंट्रोड्यूस होता 1956 मसीह बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रो जो 7th अमेंडमेंट एक्ट रही। ठीक अच्छे। ओके देन नेक्स्ट आमर क्वेश्चन रही देखा। समस्ते आंसर दियो, बहुत गुड़े क्वेश्चन रही। आई होप कि जहाँ भी क्वेश्चन रही तुम एवं समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो। ओके गोटे सेकेंड, ऑल क्लियर? ठीक अच्छे, ऑल क्लियर। एठी हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिला, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रोविजंस which affect the federal character of the constitution. They can be amended by a simple majority. Option B रही, they can be amended by 2/3 majority of both the houses of parliament. Okay, they can be amended by not only a 2/3 majority of the parliament but also ratification by at least half of the states की all of the above. तो ये क्वेश्चन आमको कौन पचारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रोविजंस व्हिच अफेक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तेबे एठियार करेक्ट आंसर टी कौन हबो? एठियार करेक्ट आंसर टी कौन हबो? देखो ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही हबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, ऑल ऑफ द अबव हबनी, ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। दे कैन बी amended by not only a 2/3 majority of the parliament but also ratification by at least half of the states. ठीक अच्छे, एटी मन रखिबो, the amendments which affect the federal character of the constitution need to be passed by special majority of the parliament and also need ratification by half of the state legislature. Okay, so option C is the correct answer. ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रही देखिबा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही, समस्त को टिके ध्यान देकी देखा पड़ो। ओके ओके देन देख नेक्स्ट आमर कौन क्वेश्चन रही, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 22तम राष्ट्र भाव राज्य भाव भारत रे किए उभाई थिला? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना। 22तम राज्य कोटा आम भारतर 22तम राज्य कोटा?
गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना कह दियो। ए क्वेश्चनटा बारंबार एग्जाम रे बहुत एग्जाम रे आसुची जे 22तम राज्य कोटा। नो, ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर सिक्किम। ठीक अछि, भारतर 22तम राज्य भाबरे 26 एप्रिल ओके 26 एप्रिल 1975 आसाम सॉरी सिक्किम गठन होइथिला। ओके, तो प्रति वर्ष सिक्किम एमर्ज होता इंडिया रो जो 22तम स्टेट भाव में 26 एप्रिल 1975 रे। तो सिक्किम स्टेट प्रति वर्ष 16 मे कौन करथाय ना तार निज राज्यर दिवस भाव जमी आम उत्कल दिवस भाव में एप्रिल 1 को मना जाए से माने 16 मे को मनई था बिकॉज दिस वाज द डे व्हेन द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम अज्यूम्ड ऑफिस। तो से तो 26 एप्रिल रे माने राज्य गठन होता सिक्किम राज्य गठन होता किंतु 16 मे रे कौन पाई कि से माने पालन करिथांते दिवस राज्यर दिवस भाव में सिक्किम दिवस भाव में कारण से दिन जो 16 मे दिन चीफ मिनिस्टर तांकर सिक्किम रो अज्यूम करथिले तांकर ऑफिस को। तो एटा तुम माने मन रखिबो। ठीक अछि, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी कोन रहिछि देखिबा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डजंट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो, भूल हो कि ठीक हो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डजंट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एमान को मध्यरु को स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर नाही। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बेंगल, आंध्र प्रदेश। तो एठी देबे यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डजंट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कौन हम रे कह दियो ना, यार भी ऑप्शन हम सी वेस्ट बेंगल। ठीक अच्छे, तो रही मन रखिबो 6टा स्टेट रही जो मानकर कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर रही किए किए से माने ना बिहार, गोटे महाराष्ट्र, गोटे यूपी उत्तर प्रदेश, गोटे कर्णाटका, गोटे आंध्र प्रदेश आ गोटे तेलंगाना। ये जो 6टा रहिले ए 6टा एमानकर बाइकैमरल लेजिस्लेचर अच्छी। सो ये 4टार कि आसी जाऊँगी कौटा वेस्ट बेंगल, बाकी ये 3टा जाकर रही बट वेस्ट बेंगल ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक अच्छे, ओके देन तो जो मैंने ऑप्शन सी आंसर दिल से आंसर करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा। देन आमर क्वेश्चन रही विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भारतर संविधान दृष्टिकोण जदि आम मैंने देखा ये स्टेटमेंट गुड़िक मध्यरु कोटा भूल हम। ऑप्शन ए रही द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय पंडित नेहरू was what become the preamble of our constitution. Option B रही preamble is enforceable in court of law. Option C रही preamble of Indian constitution has been amended only once in 1976. Option D रही preamble proves the sovereignty lies ultimately with the Indian people. क्वेश्चन कौन थिला देखि नबा। भारतीय संविधान दृष्टिकोण देखिले एमानक मध्यरु कोटा भूल स्टेटमेंट हबो। ऑप्शन ए हमर रहला कोन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय पंडित नेहरू वाज व्हाट बिकेम द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो जवाहरलाल नेहरू को द्वारा जो रिजोल्यूशन पास हेतिला सेटा व्हाट बिकम द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि हमर संविधान रो मुखपत्र थिला बा मुखबंध थिला सेटा हबो कि ना हबो नहीं। ओके, preamble is enforceable in court of law. preamble enforceable in court of law एटा हबो ठीक। ओके, तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी जो माने आंसर देला से मानकर आंसर करेक्ट अछि। ठीक अछि, preamble enforceable in court of law जोटा कि भूल हबो। ओके, एगुड़ाक तो सब करेक्ट अच्छी ना, एगुड़ा करेक्ट अच्छी बट भूल हम कौटा ऑप्शन बी हम। तो से आमको पचारे जे इनकरेक्ट कौटा, तो इनकरेक्ट ऑब्वियसली ऑप्शन बी होची इनकरेक्ट। ठीक अच्छे,
ता सहित ये आउ गोटे कथा मन रखी नब प्रिएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ दिस मीन्स दैट इज नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर आमे प्रिएम्बल को कौन जस्टिफिएबल माने एटा कौन जस्टिफिएबल कि हबनी ठीक अच्छे माने प्रिएम्बल जोटा रही जाइए किछि माने वर्ड्स चेंजेस आसी जाए धरे कौन से प्रकार जो लेखापत्र नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा Who among the following has right to declare any area as a scheduled area? काहंकर एमानक मध्यरु से राइट रही से अधिकार रही जे गोटे एरिया को से स्केड्यूल्ड एरिया भाबरे डिक्लेयर करि परिबे ओके ऑप्शन ए रही गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि स्टेट लेजिस्लेचर तेबे एठियर करेक्ट आंसर टी कोन हबो हाँ भरत मुही पढ़ाए किसी असुविधा रही ओके सुविधा असुविधा जहाँ भी रही कहब कि नहीं ओके देन देखा ओके देख कौन आमको पचारा ये हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया ओके काहंकर से अधिकार रही जेकोसी एरिया को से शेड्यूल्ड एरिया भाव में डिक्लेयर करें कहार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ओके वेरी गुड ओके तो देख जो माने ऑप्शन बी आंसर देल से आंसर करेक्ट अच्छी प्रेसिडेंट कर ही से अधिकार रही जे से जेकोसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया भाव में करना डिक्लेयर करें विथ रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ओके सो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चलो नेक्स्ट आमर क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमानक मध्यरु करेक्ट स्टेटमेंट बाछिबार अछि देखिबा चारटा जक स्टेटमेंट कोन रही ऑप्शन ए रही आमर द मिलिटरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज सबऑर्डिनेट टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑप्शन बी रही द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट सबऑर्डिनेट टू मिलिटरी पावर्स ऑप्शन सी रही द मिलिटरी पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इनसबऑर्डिनेट विथ रिगार्ड टू ईच अदर ऑप्शन डी रही द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर सबऑर्डिनेट टू डिप्लोमेटिक पावर्स ठीक अच्छे तेबे यार करेक्ट आंसर टी कौन हम देखा करेक्ट को पचारिचे पावर्स कौन हम देखी नियो चारटा जाक स्टेटमेंट देख कोटा करेक्ट हम कह ओके कहीदे जल्दी जल्दी कौन हम यार करेक्ट आंसर टी वेरी गुड ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर द मिलिटरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज सबऑर्डिनेट टू एग्जीक्यूटिव पावर ओके कारण कौन द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस एटा तो जानिछ तुम्हें माने द मिलिटरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर सबऑर्डिनेट टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स दैट्स व्हाई ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन हमारा क्वेश्चन रही हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन राइवल कैंडिडेट अगेंस्ट इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए एन दास ऑप्शन बी के साहा ऑप्शन सी सी राम ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन कौन पचार क्वेश्चन कौन पचारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन राइवल कैंडिडेट अगेंस्ट इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम भारतर प्रथम राष्ट्रपति जे थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांको विरोध रे किए छिड़ा हेतिले मेन राइवल कैंडिडेट किए थिले तांको विरोध रे एन दास थिले के साहा थिले कि सी राम थिले कि एस राधाकृष्णन थिले कौन हम तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हम रे ना मन रखिब ना एस राधाकृष्णन नथिले के साहा थिले ठीक अच्छे तांको विरोध रे के साहा छिड़ा हेतिले एबे जेमते बीजेपी बीजेडी चलची सेमिति सेतबेले जे भी हेले जने तो छिड़ा हेले राष्ट्रपति पई कि राष्ट्रपति पद पई कि जे केही भी हेले तांको विरोध रे तो छिड़ा ही हेइथिबे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर विरोध रे
जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता फॉर 2 टाइम्स गोटे होता केबे 1952 रे आउ गोटे होता 1957 रे ठीक अच्छे। तो 1952 मसीह जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता ही डिफिटेड हिज नियरेस्ट राइवल केटी साहा ठीक अच्छे। तांकर जो 1952 मसीहा कथा जदि कहबा से केटी साहा को हरैकी से निजे प्रेसिडेंट हो जाते किए ना पंडित सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अच्छे। तापरे 1957 कथा जदि कहबा 1957 इलेक्शन रे से आउ थरे मध्य राष्ट्रपति होते दी थर पाई कहाँ को हरैकी ना चौधरी हरिराम को हरैकी 1957 मध्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते। तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मन रख गुड़ाक सब मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन। अरे भरत भूल कौच जदि काटी दौच कौन कि असुविधा ना ना किसी ना सबुड़ा तो देखी तो पारुची मु काटिबार कौन मतलब लाइव रे तुम्हें भूल कहले भी किसी असुविधा ना मु तो कहूँ भूल हो पछे किसी असुविधा ना ठीकटा को किंतु मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स वी कमांड एमान को मध्यरो को रीड रो मीनिंग होची वी कमांड हावियस करप्स मांडामस को वारेंटो सर्ट्यूरारी। तेबे एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो एटा तो समस्तंकर आंसर करेक्ट ही आसीबो वी कमांड कौन हम रे यार करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन बी नहीं कि मांडामस मांडामस रा मीनिंग होची वी कमांड ओके ठीक अच्छे। ओके देख जो रेट टा रही मांडामस सेटा होची A writ of mandamus is a court order requiring a government official or entity to perform a specific act that is required by law. It is a type of extraordinary legal remedy that is available when there is no other legal means to remedy a situation and when the government official or entity has a clear legal duty to perform the act in question. A writ of mandamus can be issued by a court to a lower court, a government agency or a public official, and it can be used to require the performance of a wide range of acts including the issuance of a license or permit or permission, the holding of an election or the fulfillment of a contract. So mandamus होची कौन we command ठीक अच्छे मन रख लो ठीक अच्छे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही तो मांडामस जो मैंने आंसर देछ से आंसर करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन टी रही देखा वेरी गुड ऑल ऑफ यू जो मैंने ऑप्शन बी मांडामस आंसर देछ। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आमर रही देख द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विथ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। एबे जस्ट आमे माने करे गोटे एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया का डिक्लेयर करबा कहाँ हाथ रे न्यस्त अछि कहाँ को हाथ रे एबे ही कहितली समस्त आंसर दियो कौन कहितली एबे जस्ट के आगरो अच्छी थे सबू सबू क्लियर अच्छी वेरी गुड प्रेसिडेंट नहीं कि तो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which important human right is protected in article 21 of the constitution of India? Right to equality, right to freedom of religion, right to freedom of speech and expression, right to life and liberty. आर्टिकल 21 रे आम संविधान भारतीय संविधान आर्टिकल 21 तुम मान को को राइट दउची कौन हम तेबे यार करेक्ट आंसर वेरी गुड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जो मैंने ऑप्शन डी आंसर देला सनकर आंसर करेक्ट अछि। तो आर्टिकल 21 कौन कहूची हमको that no one may be deprived of their life or liberty unless it is by due to procedure of law. In the first 25 years or so, this article was very narrowly
interpreted by the Supreme Court to mean that no matter what the procedure of law stated, as long as it was followed, deprivation of one's life and liberty was not legal. Sorry, illegal. तो ऑप्शन डी है यार करेक्ट आंसर आमर आर्टिकल 21 रे एटा रही जे आमर प्रति नागरिक मानकर लाइफ और लिबर्टी अधिकार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा चलो। The recommendations of the Simon Commission were incorporated in which of the following? Government of India Act 1935, Mountbatten Plan, Indian Independence Act 1947 कि अगस्त ऑफर कौन पचारा साइमन कमिशन साइमन गो बैक कथा टिके मन पकाओ हिस्ट्री रे आमे पढ़ीचे। The recommendations of the Simon Commission were incorporated in which of the following act? को एक्ट रे साइमन कमिशन रो जो रिकमेंडेशन थिला सेटा को रखा जाइछि। द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमिशन जोटा कि सर जॉन साइमन को द्वारा अपॉइंट हेथिला तो से सब रही कौथे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 मसीहार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रही। वेरी गुड ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। जो मैंने ऑप्शन ए आंसर देल से आंसर करेक्ट अच्छी। ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखा। The bills related to territorial rearrangement of Indian states and union territories under Article 2 and 3 need which of the following kind of majority in Parliament? The bills related to territorial rearrangement of Indian state and union territory आर्टिकल आमर जो 2 एवं 3 रे नुआ करिकी राज्य गठन हबा किंबा यूटी बा यूनियन टेरिटोरी गढ़ा हबार जो बिल रही एमानक मध्यरु माने काहार मेजोरिटी बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट हमको इफेक्टिव मेजोरिटी दरकार कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी दरकार कि दरकार स्टेट एवं यूटी बा यूनियन टेरिटोरी मानकर टेरिटोरी अरेंजमेंट लगी कौन हम तेबे यार करेक्ट आंसर। वेरी गुड सिंपल मेजोरिटी ही दरकार ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे आर्टिकल 4 हमको कौन कहूँ कहल आर्टिकल 4 itself declares that laws made under 2 and 3 article are not to be taken as amendments to the constitution of India। ठीक अच्छे तो यही प्रकार जो लॉ रही इट कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक अच्छे तो आर्टिकल 2 and 3 को सेटा इंपोर्टेंस दिया है आर्टिकल 4 रे सेटा लिखा जाइए कि आर्टिकल 2 और 3 रे आर्टिकल 4 रे कौन लिखा आर्टिकल 2 और 3 रे जो अमेंडमेंट गुड़ाक आम कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइए माने से गुड़ाक केवल सिंपल मेजोरिटी रे ही पास करा हबो बोलिका लिखा है। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन टे देखिबा Which of the following is not a compulsory condition for termination of Indian citizenship by the central government? Option A रही समस्ते आंसर दियो रे आंसर दियो समस्ते। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कौन रही देखिबा Which of the following is not a compulsory condition for termination of Indian citizenship by the central government? Option A रहिला the citizen has obtained citizenship by fraud। ऑप्शन बी रही द सिटीजन हैज बीन इन्वॉल्वड इन illegal trade। ऑप्शन सी रही द सिटीजन हैज शोन disloyalty to the constitution of India। ऑप्शन डी रही द सिटीजन हैव बीन रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो एमान को मध्यरु देख क्वेश्चन हमको पचारिला जे एमानक मध्यरु को स्टेटमेंटा करेक्ट हम आम भारतर नागरिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जे से आमर भारतर नागरिक हो पारिबो नाही को स्टेटमेंटा मध्यरु करेक्ट हम तो ऑप्शन डी हम यार करेक्ट आंसर टर्मिनेट करा जिवो ताको आम भारतर नागरिकत्व तो द सिटीजन हैव बीन रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years 5 वर्ष अधिक समय जदि जड़े व्यक्ति आम भारत बाहर रोचे 5 वर्ष अधिक तेबे
कौन करा जिवो ना टर्मिनेट कर दिया जिवो ताको हमर भारत नागरिकत्व। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑप्शन डी जो माने आदल समानकर आंसर करेक्ट अछि। नेक्स्ट चलो देन हमर क्वेश्चन टी को देखा कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एमानक मध्यरु डीपीएसपी रु कोटा आसु नाही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 काउ प्रोटेक्शन कि प्रोटेक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ए क्वेश्चन टा मध्ये आउ थरे मु तुम मानक कहितली जदि मन थी ताहले निहाती भाव में तुम मैंने आंसर दिए यार कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा मध्य तुम मैंने कन्फ्यूज हो जाई पार तो कौन हम यार करेक्ट आंसर समस्ते कह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कि फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 कि काउ प्रोटेक्शन कि प्रोटेक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स देख ये तुम्हें मैंने भूल कल ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर आउ गोटे क्लास तुम मानक कही जे आमर जो फ्री एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 एटा आमर आर्टिकल 21A को माने आर्टिकल 45 रेट रहा तुम्हें कह आर्टिकल 45 तो आमर डीपीएसपी अंडर रे जाउची तो यहाँ केमितिका हेनी डीपीएसपी अंडर रे कौन आसबनी तो मन रख जो आम डीपीएसपी रे रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ आमर रही आर्टिकल 45 रे रही बट आमर जो 86तम आमेंडमेंट जोटा कि होता 2002 86तम आमेंडमेंट अनुसार एटा को फंडामेंटल राइट अंडर किना आर्टिकल 21A को उठे दिया जाइए सो एटा आमर कौन ना जो आर्टिकल 45 टा आर्टिकल 45 रे रही एटा डीपीएसपी मध्य गणा हम ना ठीक अच्छे यहाँ रईट हो गला बर्तमान डीपीएसपी रहा ना सो ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर मन रख देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन देख ओके ठीक अच्छे in which case the Supreme Court for the first time limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time. In which case the Supreme Court for the first time limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time. Minerva Mills versus the Union of India, A.K. Gopal versus the State of Madras, Golaknath versus the State of Punjab, Kesavananda Bharati versus the यूनियन ऑफ इंडिया एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा तो आसब निहाती भाव में कौन हम क्वेश्चन कौन देची फर्स्ट देखनी इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट प्रथम थर कि लिमिट कर देइथिला पार्लियामेंट रो पावर को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मन रखिब ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब ठीक ओके The Supreme Court for the first time in the year केबे 1967 रे 1967 रे लिमिट कर देइथिला पार्लियामेंट रो पावर को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम द जजमेंट वाज रिलेटेड टू गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस ओके ऑप्शन सी जो माने आंसर देला समानकर आंसर करेक्ट हबो बुझिला देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टे देखिबा Who can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings when the offices of both the speaker and the deputy speaker fall vacant? The speaker himself, the president, the prime minister, the council of ministers. कौन बचला Who can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceedings when the offices of the both the speaker and the deputy speaker fall vacant? जेतेबेले जेतेबेले लोकसभा स्पीकर एवं डेपुटी स्पीकर जगह खाली थी माने कहीं हेले से नथिबे बा दीटा जगह खाली पड़ी तो सेतेबेले किए एमानक मध्यरु अपॉइंट दे पारिबे लोकसभार जेकोसी जने मेंबर को जे से सभापतित्व ग्रहण करेंगे बोली बा स्पीकर हेबे बोलिका ठीक अच्छे तेबे यार करेक्ट आंसर टी कौन हम कहार अधिकार रही कहार पावर रही मानक मध्यरु वेरी गुड द प्रेसिडेंट ओके से चूज कर
पारिबे सो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि जो माने ऑप्शन बी आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट हबो देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा how many departmentally related standing committees were created on the recommendation of the rules committee of the lok sabha in 1993 1993 ମସିହାରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା 17 18 21 25 क्वेश्चन कौन पचारा टे मन देकी देख हाउ मेनी डिपार्टमेंटाली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज वेयर क्रिएटेड केतेटा टोटल डिपार्टमेंटाली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी क्रिएट होता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमिटी ऑफ द लोकसभा इन 1993 मसीह रूल्स कमिटीर रिकमेंडेशन रे जो लोकसभा रूल्स कमिटी रही तार रिकमेंडेशन रे केतेटा डिपार्टमेंटाली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी क्रिएट होता 17टा 18टा 21टा कि 25टा कौन हम तेबे यार करेक्ट आंसर वेरी गुड तो ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर 17टा ठीक ओके मन रखिबो एटा ऑप्शन ए हबो यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जस्टिस is not mentioned in the preamble of the constitution of india एमान को मधुर को जस्टिस ता मेंशन करा जाय नाही प्रियम्बल देखिबा सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिकल देख कौन हम तेबे यार करेक्ट आंसर समस्त आंसर दियो इजी क्वेश्चन सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिकल कौन हम कह दियो जल्दी जल्दी एमान को मध्यरु क्वेश्चन कौन पचारा एमान को मध्यरु को जस्टिसटा आम प्रियम्बल रे नाही वेरी गुड अच्छा ओके कह दियो जल्दी जल्दी कह दियो सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिकल अरे पागल माने रिलीजियस हम परा आम भारत परा हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो रिलीजियस विषय रिलीजन विषय किसी कहूँ कि आमर प्रियम्बल नाही तो ऑप्शन सी हम ना यार करेक्ट आंसर ओके द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस that is social economic and political religious justice is not mentioned there okay तो ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर ठीक जो मैंने ऑप्शन सी आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि हु डिसाइडेड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कर जो सैलरी एवं अलाउंसेस रही ताकू किए डिसाइड करिथांते मान मध्यरु बाय पार्लियामेंट बाय लोकसभा बाय राज्यसभा बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एमान मध्यरु किए ठीक करिथांती जे पीएम को केते टंका दिया जिवो सैलरी कौन तांको अलाउंसेस दिया जिवो ए सब किए डिसाइड करिथांती कौन हबो जेहेतु पीएम को कथा कह ऊपर किसी गोटे सीट ही ये सब डिसीजन नहीं पार ना ऑब्वियसली बाय द पार्लियामेंट ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर वेरी गुड तो ऑप्शन ए जो मैंने आंसर देल से आंसर करेक्ट अच्छी देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देन आमर क्वेश्चन रही ओके देख हु इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स एमान को मध्यरु किए प्रोरोग करि परिबे लोकसभार कौनसी भी सेशन को किए सेम ही प्रेसिडेंट ही करि परिबे ठीक अछि ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर ठीक अछि स्पीकर हबनी द हाउस ऑफ पीपल ऑफ द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड and prorogued by the president of india under article 85(2) of the constitution of india okay आर्जनमेंट जितेबाला हम स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा हम मन रखिब यहाँ गोटे हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट कथा मन रख जे लोकसभार जो हाउस ऑफ पीपल ऑफ द लोकसभा ठीक अच्छे डिजल्व एवं प्रोरोग क्या द्वारा हम प्रेसिडेंट द्वारा हम जदि ये पचार दे था जे आर्जनमेंट हम बोलिका ताहले स्पीकर होता मन रहा ओके मन रखिब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बुझीपार तो कौन कहली ओके वेरी गुड देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच अमेंडमेंट हैज
provision for the reservation up to 10% of seats for economically weaker sections of तम 101तम 100तम संविधान संशोधन अनुसार को आमेंडमेंट अनुसार एबे एबे ही हेची एबे एबे तो चली तार गत वर्ष तार कार्यकारी माने से आमेंडमेंट रे जहाँ थिला सेटा कार्यकारी होची नाही रे 103तम ओके ऑप्शन डी हैला यार करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 नहीं ऑप्शन 3 नहीं माने 101 102 100 नुह एगुड़ाक 103तम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2019 मसीह सेटा ही अलाउ करिथिला द स्टेट्स टू मेक ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ द सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ओके तो 103तम संविधान संशोधन जोटा कि 2019 मसीह ठीक अच्छे ओके ओके देन गोटे सेकेंड ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा When was the Parliamentary Forum on Millennium Development Goals created? 2000, 2010, 2013, 2015 केबे पार्लियामेंट्री फोरम गठन करा जायथिला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखिकी 2000 केते रे 2013 रे ओके देख आउ गोटे कथा ये मन रखब एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट कथा एठिकिना आमे देखिले जे पार्लियामेंट्री फोरम गोटे वार्ड तुम मैंने देखिल जोटा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखिकी क्रिएट होता 2013 मसीह तुम मैंने जानिल एटा मध्य मन रखिब वर्तमान सुधा टोटाल 8टा पार्लियामेंट्री फोरम रही कहा कहा उपरे गोटे है वाटर कंजर्वेशन उपरे ओके जोटा कि 2005 रे हेतिला आउ गोटे हेतिला यूथ मानक उपरे जोटा कि 2006 रे हेतिला पार्लियामेंट्री फोरम चिल्ड्रेन मानक उपरे हेतिला जोटा कि 2006 रे ही हेतिला ठीक अच्छे तो ये टोटाल आमर 8टा पार्लियामेंट्री फोरम रही एवं जो 2013 रे जोटा हेतिला पार्लियामेंट्री फोरम सेटा हेतिला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखिकी ओके मन रखिबो एटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in the following situations ad hoc judges are appointed in the supreme court को सिचुएशन रे ad hoc जज माननको सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंट करा जिवो ऑप्शन ए रही when no one is available for permanent appointment कि ऑप्शन बी रही when there is no quorum of the judges available to hold session कि when there is an abnormal increase in cases pending before the court ऑप्शन डी रही when some judges go on leave तो केते बेले आडहोक जजेस माननको सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंट करा जिवो जेते बेले परमानेंट अपॉइंटी माने नथिबे कि देयर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड द सेशन कि जेते बेले पेंडिंग रह जाइथिबो केसेस गुड़िकर किंबा अबनॉर्मल इनक्रीज हो जाइथिबो केसेस मानकर सेते बेले कि जेते बेले किछि जजेस छुट्टी रे जाइथिबे तो केते बेले आडहोक जजेस माननको को सिचुएशन रे सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंट दिया जिवो जेते बेले नो कोरम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड द सेशन को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 187 के अनुसार at any time if there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India, with previous permission of the President and after consultation with Chief Justice of the High Court, concerned request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such a period necessary. एटा मन रखिबो ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देख, व्हाट एक्शन कैन द गवर्नर टेक ऑन ए बिल सेंड टू हिम आफ्टर इट इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ताहले गवर्नर एक्शन कौन रते गोटे बिल तांको द्वारा पास है कि स्टेट लेजिस्लेटर को बाय द स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास है कि तांको पाखकु जाइछि गवर्नर को पाखकु जाइछि गोटे बिलटे तापरे गवर्नर एक्शन कौन, गिव हिज असेंट टू द बिल, withhold his assent to the bill, return the bill for reconsideration of the state legislature कि reserve the bill for the consideration of the president। तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर टी कौन हबो देखिनियो, चारटा जाक मध्यरु कोटा हबो, सब गुडी को हबो, ठीक सब गुडी को हबो ऑल ऑफ द अबव। तो गोटे बिलटे जितेबाला स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास हो जाए थाए गवर्नर को पाखक से चली जाए थाए तांको देख नेक्स्ट आम क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को किए अपॉइंट करी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को कथा आसिले ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर स्टेट रे अछंती तो ऑब्वियसली यार करेक्ट आंसर कौन हबो, वेरी गुड गवर्नर ही हबो। एठी प्रेसिडेंट हबो नाही, भूल मारदबनी प्रेसिडेंट बोला, चीफ मिनिस्टर अच्छी, चीफ मिनिस्टर अच्छी माने सेटा हबो कौन, गवर्नर ही हबो। तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। जदि को आर्टिकल कथा पचारिबो आर्टिकल 164 अनुसार चीफ मिनिस्टर गवर्नर को द्वारा ही अपॉइंट हेबे, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देन आमर क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बोथ ऑफ देम कि नॉन ऑफ देम, कह दियो कौन हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड with the development of urban local bodies in India, कौन बरे बोथ ऑफ देम दीटा जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1935, ठीक अच्छे। ए दीटा जगह जोटा आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रही ना, 1919 जोटा कि इंट्रोड्यूस करथिला कहा को डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस मेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू बी हैंडल्ड बाय ए रेस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। पुणी थे सेटा कौन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेल को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर माने डिक्लेयर कर देला ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सो बोथ ऑफ देम हबो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक अच्छे। ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर, बुझेला, वेरी गुड। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड मायो, हॉब हाउस, लॉर्ड रिपन किए मान मध्यरु कहीं भी नुहंती, एमान मध्यरु किए द चेयरमैन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, कौन हबो यार करेक्ट आंसर कह दियो। ओके मन रखिबो यार करेक्ट आंसर टी कौन हबो, हॉब हाउस हबो यार करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी नो मायो हबनी, मायो नहीं हॉब हाउस। तो जो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन थिला जोटा को कि हेड किए करथिले हॉब हाउस करथिले, से जो रिपोर्टटा थिला तार रिपोर्ट सबमिट कर दिया जायथिला 1909 रे। यार मुख्य लक्ष्य थिला जे टू इंस्टीट्यूशनलाइज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर, पुणी थे किभली भाव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को माने गठन करा जाय परिबो, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर, ठीक अच्छे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज ऑथराइज्ड टू रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। एमान मध्यरु काहांकर पावर रही जे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एवं इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन से भी ऑफिस रही थांतु तो से तांको उड़े देबे माने रिमूव कर देबे। काहांकर पावर रही सुप्रीम कोर्ट कर, प्रेसिडेंट कर, पार्लियामेंट रो कि कैबिनेट रो,
Okay, president. Okay, president is the correct answer. President is authorized to remove the chief information commissioner or any information commissioner from the office on grounds such as if he is adjudged insolvent, or if he has been convicted of an offense which involves a moral turpitude. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଲ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ପରଫର୍ମଡ ବାଇ ଚିଫ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର। ସିଭିଓଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କାମ ଦେଖିବା। କଲେକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆବାଉଟ୍ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭେରିଫିଏବଲ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହିମ୍। Statement 3 ରହିଛି processing investigation report for further consideration of the disciplinary authority concerned। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହବ କୁହ। क्वेश्चन कौन देछि देखिदबा आउथरे कार्य कौन। ठीक अच्छे, तीन जगह हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेट्स हाव ओके उपलोकायुक्त। एमानक मध्यरु को स्टेट मानकर उपलोकायुक्त रहिचंती। राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश कि ऑल ऑफ द अबव। एटार भी ऑप्शन डी ही हम यार करेक्ट आंसर। स्टेट्स लाइक राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र हाव उपलोकायुक्त, okay, other than the lokayukta, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh only have the lokayukta, but the states like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh have upalokayukta। okay, mane rakhiba eta। next question dekha, which of the following articles deal with the administrative tribunals। emanko madhyaru administrative tribunal सहित को article रो संबंध रहिछि। आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B, आर्टिकल 324 कि 325। आर्टिकल 323A होछि यार करेक्ट आंसर। पार्ट XIV ए अनुसार इंडिया माने आम भारतर जो ट्रिब्यूनल रही ना, ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू आर्टिकल्स। आर्टिकल 323A जोटा कि डील करिथाय कहा सहित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सहित, एवं 323B जोटा रही 323B सेटा डील करिथाय ट्रिब्यूनल मानक सहित फॉर अदर मैटर्स। ओके, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लगी 323A करना डील करिथाय। ओके, मन रखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution deals with the property, contracts, rights, liabilities, obligations and suits of the union and the states। एट तेबे यार करेक्ट आंसर टी कौन हम। आर्टिकल 266 टू 84, आर्टिकल 294 रु 300, आर्टिकल 314 रु 335 कि 360 रु 375। कह दियो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम। जेहेतु एबे पळे आसला कौन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लिएबिलिटी, ऑब्लिगेशन। ठीक अच्छे, एटा मन रखिबो जोटा कि हमर पार्ट XIII रे रही आम कॉन्स्टिट्यूशन रो, जो थरे कि आर्टिकल 294 रु 300 मध्य इंडिया डील करुची विथ द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लिएबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ओके, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर, एटा मन रखिबो। ठीक, ओके देन। तो सांग माने वर्तमान आमे माने डिस्कशन करे नेले हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को जहा थिला आजिर। ठीक अछि, जदि आउ केही किछि न बुझी पारिछ तो मते पचारि पारो, नचेत वर्तमान रो क्लास टी को इठ रखिबा। ओके, आउ कहार किछि असुविधा रहिछि जदि पचारि पारो। ऑल क्लियर। आई होप कि तुम मैंने क्लास टी को बुझी पारि थिबो। ठीक ठाक अच्छी क्लास, क्वेश्चन सब ठीक अच्छी। पचारुछि मु सब बुझी पारुछ, जहाँ कहि कहूछि मु सब बुझी पारुछ तो।
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? କହିଦିଅ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର୍? ସବୁ ବୁଝି ହେଉଛି? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁନି? ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ? ସୁଧାଶ୍ରୀ, ଭରତ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଆଉ କିଏ ଆମର କମନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କମନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ? ଓକେ, ଟିକେ କହିଦେରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ପଳେଇଲ ବୋଧେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିକି ପଳେଇଲେଣି। ଓକେ ଦେନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ପରେ ବି ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ବଟ୍ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ ଦେନ୍, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।